बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल में खुशामदीद। टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सम फन एक्सरसाइजेज फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 3। We will start with exercise A, where we need to complete a dialogue using the right verb forms. Before we dive in, make sure you check out my previous two videos about the present simple tense and the present continuous tense. It will really help you understand today's exercise better. So let's get started and have some fun together. लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यूनिट 5 रिवीजन एक्सरसाइज ए कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग द राइट वर्ब फॉर्म्स। दादा यू आर वेरी क्वाइट। नादिया व्हाट आर यू डूइंग। नादिया तुम बहुत खामोश हो, तुम क्या कर रही हो। नादिया आई एम रीडिंग अ स्टोरी अबाउट स्पेस। मैं खला के बारे में एक कहानी पढ़ रही हूँ। दादा डू यू ऑफन रीड स्पेस एडवेंचर्स। क्या तुम अक्सर स्पेस एडवेंचर्स पढ़ती हो। नादिया नो आई यूजुअली रीड स्टोरीज़ अबाउट एनिमल्स। नादिया नहीं, मैं आम तौर पर जानवरों के बारे में कहानियाँ पढ़ती हूँ। दादा इज़ दैट सायरा इन द किचन। व्हाट इज़ शी डूइंग। दादा क्या सायरा किचन में है, वो क्या कर रही है। नादिया शी इज़ मेकिंग अ केक। वो केक बना रही है। दादा डज शी इंजॉय कुकिंग। क्या वो खाना पकाना पसंद करती है। नादिया यस शी यूजुअली मेक्स फ्रूट केक्स बट दिस टाइम शी इज़ मेकिंग अ चॉकलेट केक। नादिया हाँ, वो आम तौर पर फ्रूट केक बनाती है लेकिन इस मर्तबा वो चॉकलेट केक बना रही है। दादा आई होप शी विल कीप सम फॉर मी। दादा मुझे उम्मीद है कि वो कुछ मेरे लिए रखेगी। एक्सरसाइज बी सर्कल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। जुमले मुकम्मल करने के लिए सही लफ्ज़ पर दायरा बनाएं। ऑल राइट, लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट सेंटेंस। इट सेज You can see through. Now we have three words to choose from: glass, stone and steel. Let's think about each one. First up, we have glass. What do you think? We can see through glass, right? Think about windows or glasses we drink from. Next, we have stone. Can you see through a stone? No, it's solid, so that's not the right choice. So, my lovely students, finally we have a steel. Steel is also a solid material, so we cannot see through that either. So, which word do we circle? Yeah, that's right. It's glass. You can see through glass. Let's look at the second sentence. You collect from a field. Your choices are bricks, straw, sticks. Think about it. What do you usually find in a field? That is right, it's straw. We collect straw from a field. Great job, everyone. Now let's move on to the next one. A bridge joins two sides of. Your options are valley, village, mountain. Which one do you think it is? Yes, a bridge joins two sides of a valley. Well done, everyone. Number 4 sentence is a tiger does not have. Your choices are stripes, spots, claws. Tigers are known for their stripes, right? So, what's the answer? That's right. A tiger does not have spots. Awesome job, everyone. We are doing great, right? Here's the next one. Number 5. A monkey does not have. Your options are a tail, teeth, horns. My dear students, monkeys are famous for their tails, right? So, what do you think? Exactly, a monkey does not have horns. You are all my superstars. Just one more to go, okay? Number 6 is the swimming pool is 2 meters. Your choices are high, deep, tall. Think about swimming pools.
They are not high or tall, right? Yes, the swimming pool is 2 meters deep. Fantastic job, everyone. Exercise C is complete the box with the countries, nationalities, and languages. Now we are going to explore something super interesting: countries, nationalities, and languages. Are you ready? Let's go. First, let's talk about what a country is. A country is a place where people live, and it usually has its own government, laws, and rules. For example, we have countries like Pakistan, India, Canada, and Brazil. Now, what is nationality? Nationality is a fancy word that tells us which country someone belongs to. If you are from India, your nationality is Indian. If you are from Pakistan, your nationality is Pakistani. And if you are from Japan, your nationality is Japanese. Easy, right? Next up, let's talk about languages. A language is how people talk to each other. Every country usually has its own main language. For instance, in Pakistan, people often speak Urdu. In India, people often speak Hindi, while in Spain, they speak Spanish. Okay, my dear students, मुझे एक बात बताएं, why is it important to know about nationalities and languages? Because it helps us understand and respect each other. Every country has its own culture, traditions, and ways of life. Learning about them makes the world a more exciting place. चलें फर्स्ट कंट्री देखें। नंबर 1 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्या है? पाकिस्तानी। और लैंग्वेज क्या है? उर्दू। सेकंड कंट्री कौन सा है? आप लोगों की आसानी के लिए मैंने फ्लैग्स भी लगा दिए, ठीक है ना, हर कंट्री के आगे। सेकंड कंट्री है ब्रिटेन, ठीक है, उसकी नेशनैलिटी है ब्रिटिश और लैंग्वेज इंग्लिश। थर्ड पर है नेपाल। नेपाल की नेशनैलिटी नेपालीज़, लैंग्वेज नेपाली। नंबर 4 पर है बांग्लादेश, नेशनैलिटी बांग्लादेशी, लैंग्वेज बंगाली। नंबर 5 पर है चाइना, नेशनैलिटी चाइनीज़, लैंग्वेज चाइनीज़। सेकंड लास्ट इज़ कनाडा, नेशनैलिटी कैनेडियन, लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच। लास्ट इज़ अर्जेंटीना, nationality is Argentinian, language Spanish. Great job everyone. Remember, practice makes perfect. If you enjoyed these exercises, don't forget to like and subscribe for more fun learning activities. See you next time. Allah Hafiz.